Hello guys, welcome to my channel. So I am going to make a playlist about organic chemistry where I am going to be covering almost every single topic in organic chemistry. We will start with isomerism and we will talk about isomerism in this lecture. So what is isomerism? Isomerism is when two molecules have the same molecular formula but different structural formula. The arrangement of molecules is different. So we have two types of isomerism, structural and stereoisomerism. तो ये क्या होते हैं हम लोग ये पढ़ते हैं. In structural we have the same molecular formula but the arrangement of atoms is different. तो structures अलग अलग होते हैं दोनों के. In stereoisomerism molecular formula भी same है and arrangement of atoms भी same है. The only difference is that in the 3D structure of the molecule. तो हम लोग पहले एक एक करके दोनों को डिस्कस करेंगे. We'll start with structural isomerism. In structural isomerism we have chain isomerism, we have position isomerism, we have meta isomerism, and we have tautomerism, and we also have functional isomerism. And whereas in stereoisomerism we have three subcategories which are optical isomerism, geometrical isomerism, and we also have conformational isomerism. We are going to discuss each of these categories in detail further. For now, let's start with chain isomerism. करके सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं कि कौन सी कैटेगरी में क्या होता है. तो वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट कैटेगरी which is chain isomerism, which falls under structural. तो पहले एक एक करके वी विल डिस्कस ईच ऑफ द कैटेगरी इन स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, चेन, पोजीशन, मेटा, टॉटोमरिज्म, फंक्शनल आइसोमरिज्म, एंड देन विल मूव टू स्टीरियो आइसोमरिज्म. तो हम स्ट्रक्चरल से शुरू करते हैं. वी हैव दिस व्हेन द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल इज डिफरेंट ड्यू टू द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन. So if you were to describe chain isomerism in a line, we can say that the structures are different due to the longest carbon chain. Okay, so I will explain what this is. तो हम लोग दो एग्जाम्पल्स ले लेते हैं अभी के लिए. Let's just say that we have butane. Okay, this is butane chain of 4 carbons. अगर मैं इसी को और दूसरे तरीके से दिखाना चाहूँ तो आई कैन टेक द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ 3 कार्बन्स एंड एक ब्रांच हो जाएगी सेकेंड कार्बन पे, अ ब्रांच ऑन द सेकेंड कार्बन. C4H10 से अगर हमें आइसोमर्स बना के दिखाने हैं तो हम ये बना के दिखा सकते हैं. वी कैन शो दीज आइसोमर्स. बट इफ़ वी वर सपोज इफ़ समबडी टोल्ड अस दैट मेक आइसोमर्स, स्ट्रक्चरल चेन आइसोमर्स ऑफ C5H12, then हम कैसे बनाएंगे? I'll show it to you. First option we have is, let's just take a big carbon chain of 5 carbon atoms. This is pentane. Okay, and हमारे पास और भी options हैं. We can either take the main carbon chain of 4 atoms and we can place the another carbon on the second atom. Okay, and हमारे पास एक और option है. We can do this. We can take the chain of 3 carbon atoms and place 2 carbon atoms on the central carbon. और इसको तो अगर हम आगे पीछे भी कर देते हैं तो भी it will remain the same. So इसके हमारे 3 chain isomers बन सकते हैं. So let's try making structural chain isomers of
propane. We can draw 3 carbon atoms, and if suppose I were to change the main carbon chain, I can not place the third carbon atom here or here because it will still be the same molecule. So for chain isomerism we need at least 4 carbon atoms. तो 4 कार्बन एटम्स का होना बहुत ज़रूरी है मिनिमम फॉर चेन आइसोमेरिज्म. वी विल डिस्कस द नेक्स्ट आइसोमर्स विच इज़ पोजीशन आइसोमेरिज्म. So what is exactly position isomerism? I'll explain it to you. When the position of double bond, triple bond, functional group or substituent changes in a given carbon chain, then it is known as position isomerism. Let me give you some examples. Suppose we have but 1 in. Okay, so if I were to change the position of this double bond, then it will give us but 2 in. So these both are position isomers. Why? Because the position of double bond is changing from 1 in to but 2 in, right? So इसको हम लोग position isomerism बोल सकते हैं because in this example the position of double bond is changing. Similarly we can do it for triple bond. We can change it from but 1 ine to but 2 ine, and similarly we can do it for functional groups. Let's suppose that we are taking let's just say that we're taking propanol. Suppose I took propanol. So the position of hydroxyl group in this alcoholic group in this carbon chain is 1, right? I can change it to the position 2. So we will get, we can change the position of hydroxyl group from first carbon atom to the second carbon atom in the carbon chain. So this is called position isomerism, where we can change the position of a double bond, triple bond or functional group or a substituent in the given carbon chain. See, the only difference between chain isomerism and position isomerism is that in chain isomerism we are changing the main carbon chain. जो हमारी पेरेंट कार्बन चेन है उसको हम लोग चेंज कर रहे हैं. कभी वो 3 एटम 4 की थी तो उसको हमने चेंज करके 3 का कर दिया. इन पोजीशन आइसोमेरिज्म वी नॉट चेंजिंग चेन ऑफ द कार्बन एटम्स. चेन हमारी सेम है. इफ़ वी हैव द पेरेंट चेन ऑफ 4 कार्बन एटम्स देन इन पोजीशन आइसोमेरिज्म वी विल स्टिल हैव चेन ऑफ 4 कार्बन एटम्स. हम लोग सिर्फ फंक्शनल ग्रुप या फिर सब्स्टिट्यूएंट या फिर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड इसी की पोजीशन को हम चेंज कर सकते हैं. मेन पेरेंट कार्बन चेन शुड बी सेम.